Make a start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मेरी तरफ से सबको पहले बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आप सब सुनने वालों को मेरा नाम नाइला यूसुफ है और मैं आपके लिए इमिग्रेशन स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि 4 से लेके 5 तक मेरा आपका CVFM रेडियो पे साथ रहता है, लेकिन पिछले साल किसी वजह से मैं नहीं हाजिर हो सकी और जो है ना इस साल फिर आपके साथ दोबारा अल्लाह ने जिंदगी दी और आपके साथ दोबारा से हाजिर हो गई हूँ और आप सबकी दुआओं की बदौलत जो है ना अल्लाह ताला ने करम किया है मुझ पे और मुझे सेहत बख्शी है ताकि मैं आप सबको इमिग्रेशन के हवाले से काम और इंफॉर्मेशन दे सकूं। इन इस प्रोग्राम में बायदरीस से बातचीत इस वाले से होती है कि हम आपको मालूमात दे सकें CVFM पे जो कानूनी तब्दीलियां आती हैं या कानून में जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इमिग्रेशन के हवाले से, तो आप जो है ना इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम से हासिल कर सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार है ये रेडियो रमज़ान का जो ये हमें कितनी सहूलतें, कितनी इंफॉर्मेशन और सब कुछ हमें देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना ये इंफॉर्मेशन देती आऊँगी कि जो कानूनी तब्दीलियां हैं उनमें जो अभी फिलहाल स्पाउस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स आपको बताऊंगी कि स्पाउस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और दूसरी बात आई विल टेल यू information about the new priority service if people aren't aware of that from abroad, which has taken place for people because of the Ukraine crisis. There was a lot of delays in applications. They were taken from 6 to 9 months to 12 months to be able to make a decision. And also कोविड की वजह से भी काफी एप्लीकेशंस डिले हुए थे, तो उस वक्त के भी केसेस अभी तक लोगों के जो है ना फंसे हुए थे सिस्टम्स में। लेकिन अभी जो इनकी न्यू सिस्टम जनवरी से शुरू हुई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों को सहूलत हासिल है कि वो प्रायोरिटी सर्विस का जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं और उसके हवाले से आपको मैं इंशाल्लाह CVFM लाइव पे ये इंफॉर्मेशन दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि आप सब जानते हैं कि स्पाउस वीज़ा जो अपेंडिक्स FM रूल 2012 से शुरू हुआ था, तो जो लोग अब्रॉड जाके किसी भी मुल्क में शादी करते हैं या शादी करके आते हैं तो उन्होंने रूल्स के मुताबिक they need to apply for the visa for their spouse to come over into this country. And there's newlyweds, new spouses, new information that's taken place. Like, people are going abroad and then they come back and they ask for questions and they ask for advice of how we're going to apply, which category we're going to apply under, and what is the basic requirements. So ye jo requirements hai na, ye obviously I always give the example of driving laws. Ki jaise aap ek driver hain aur aap gaadi chalate hain, you've got DVLA laws which govern you of what driving speed you're going to do on a road, whether you're going to drive on the 30 miles per hour or 70 miles per hour. And that's the law that you were following. The Appendix FM is the law of the spouse visa. So people think, what is Appendix FM? Appendix FM is the same as DVLA laws, driving laws. So this is now your spouse law. So as long as you tick all the boxes and all the pieces of jigsaw fit in this category, you will be able to apply for your spouse requirement in that category and be able to get your spouse over.
in to this country on a visa. There's obviously different categories after that that you have to follow, but prior to that, you will need to follow the rules and regulations for this. So ये regulations in place हैं जो spouse visa की category में आते हैं वो 4 requirements हैं. तो firstly आपकी जो requirements है वो तो आपकी है ना जैसे English test की requirement है. So English test जो पास करना है आपके spouse ने abroad, उसमें उन्होंने A1 का टेस्ट पास करना है और स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट पास करना है. वो अगर आपकी मसलन शादी अरेंज हो गई है और शादी की अरेंजमेंट्स जारी है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले भी जाने से पहले भी वो पास कर सकते हैं as long as they've got an ID document like a passport also, so they can obviously they can apply for the visa and that is valid for 2 years. So आपके जो A1 का test है, they can do that prior to the spouse going over. The validity is 2 years for that. Secondly, if for example they're educated over there, उनके पास इतना है कि वो उनकी education इतनी है that they've done a degree taught in English, so they've got a degree which is fulfilling the requirement. They can get that recognized by UK NARC, which is a company in London which charges a small fee, and then they accept that they've passed a recognized English degree. So then with that degree, they can be exempt. So उनको फिर ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा A1 का टेस्ट, लेकिन उस टेस्ट की ये सहूलत है आपको हासिल है कि जब वो इधर इस मुल्क में भी आएंगे तो उनको एक A2 का टेस्ट करने पड़ेगा 2.5 साल के बाद, फिर एक B1 का टेस्ट भी करना पड़ता है 5 साल जब खत्म होने को आते हैं. So what the requirement is that they have to show an English language assessment. So this test, what they've done, is only valid for 2 years, which is the A1 test, which expires. But the degree which they have and has been recognized, you might think, oh, I'll just do the A1 test और फिर उधर जाके दोबारा से टेस्ट दे लेंगे. ये अगर वो 125 या 125 पाउंड लेते हैं आपकी डिग्री recognize करने में, that will save you money in the long run, because when you do the B1 test and you do the A2 test, you still have to pay a fee of £150 again, and £150 again at the B1 stage. Life in the UK test तो वो must है indefinite के लिए, लेकिन extension के लिए भी A2 का test देना पड़ता है in the spouse visa 5-year route. So ये बात है कि अगर आपने वो डिग्री है उनके पास इल्म है और वो 125-30 पाउंड देके आप उसको recognize करवा लेते हैं, you get that recognized, then that will save you £300, £400 in the long run, because you can then each time use that for an extension and again for nationality. So then that's why you must, research that, UK NARC is just, if you just Google that, it'll give you the information on there how to get we send them a copy of the degree and the fee. And they will then, as long as you are satisfied, not any degree in Pakistan में अगर किसी भी डिग्री पे ये नहीं बात, या इंडिया या बांग्लादेश या किसी मुल्क में कोई भी डिग्री नहीं चलेगी. Is the country that degree has to be taught in English. उनको ये इंग्लिश में उन्होंने सिखाई होगी. So as long as उन्होंने ये डिग्री जो है ना इंग्लिश में उन्होंने पढ़ी है उधर उस मुल्क में, और वो इधर से आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये डिग्री हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि इसको इंग्लिश में इनको इसका इल्म हासिल हुआ है, तो फिर वो इस डिग्री को लेके they can then accept that and then use that for future applications. Obviously there's other tests as well, but the main English speaking and listening test is the main test.
The second requirement, obviously, is the financial requirement, and the financial requirement is in different categories. So you've got category A, which is where you've got the same income. Now, this is very important. You must have the same amount. आपकी income जो है ना, अगर 18,600 income है आपकी साल की और या इससे ऊपर भी है, and you've had the same income for a continuous period for 6 months, you can apply in category A. So in A, you must have over 1550 gross. That's with tax. So the question comes, is it the payment that goes in the bank or is it the gross income? No, it is the income from where you show that you have had before tax and national insurance is deducted. So the net pay is the one that goes in the bank. The gross pay is prior to that. So your income there must be above 1,550 a month or weekly 360. So £360 a month is what is the minimum requirement for Appendix FM. So that's gross. So times that by 312 or 360, your income is over 18,600. So then you need to show this as a 6 month fluctuation of the income. For example, if 1 month you've earned 1583 or you've earned 1590 and the next month you've gone down and you've earned only 1500, then you fall into category B. So in category B, you must do 12 months of the same income. Otherwise, when they do the visa application, they take the lowest amount. So they will then, if you've dropped to 1500 1 month, because you didn't go to work or you didn't do it, then what will happen is they will calculate your income from that amount, and then you won't, even though you might have earned over 18,600 in the financial year, we have you only provided 6 months papers, वो आपकी इनकम काउंट नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपको साल की इनकम देनी पड़ती है, because you haven't fulfilled the same amount continuously for 6 months. If you're over the amount and you do it, then obviously even higher than that, sometimes they take that into account, but the minimum income is 1550, which you can't drop. Now, your 6 months, apart from the wage slips, you will need to show your employment letter, which has a validity of 28 days. So when you're about to apply, get your letter in the last month. So then you can apply with a 28-day letter. And then that must have the 4 magic things on there. So उस पे ये लिखा होना चाहिए कि आपका काम क्या है, ये परमानेंट जॉब है, आपकी तनख्वाह कितनी है और आपने काम शुरू कब किया है. तो ये चीजें उस लेटर पे लिखी हुई जरूरी है. If you've just joined us, you're listening to CBFM Radio Ramadan Live on Facebook Live and on YouTube, and you're with me, Nila Yusuf, with the Immigration Special Program. Between मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह 4 से 5 तक रहेगा, और मैं आपको ये इमिग्रेशन के जो मालूमात है इसके बारे में जो है ना दे रही हूँ इंफॉर्मेशन. तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप, मैं कॉल्स नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप स्टूडियो के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो है ना, और आप इस पे आप मैसेज करके, तो अगर कोई सवाल है तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं. तो दूसरी बात है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 6 माह के पेपर, जैसे मैं बता रही थी कि इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट और फिर 6 माह के पेपर्स आपके पास होने लाजमी है. उसके अलावा आपके पास अकोमोडेशन, रिहाइश होनी चाहिए. इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये वो है कि आप जो रिहाइश है वो इतनी होनी चाहिए, you either have rented property or you have property that you own, or you have living with parents.
तो ये है कि उसमें कमरे इनफ होने चाहिए जिनमें वो आके तो रह सकते हैं मियाँ बीवी, so where you can live together. So in case, for example, there's 20 people living in a house and there's only 4 bedrooms and 4 rooms downstairs, that's overcrowding. So they won't accept that that person can come and join you here. So obviously you can rent a place and you can show rented accommodation. You don't have to own a house. You could just show that you've got your rent up to date. Landlord की तरफ से letter हो जाता है कि वो आपको रिहाइश और जो है ना इनफ है और वो आपको रेंट भी अप टू डेट है and you can come and stay and you've got some bills on your name. अगर आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं and you're living with your family, then you have an authority letter from the parents. The land registry, now land registries obviously are sometimes packed away in suitcases, packed away in filing spaces that we can never find the title deeds. So what we advise is, you can just download a copy of it it just costs £3 from the land registry's website, and that will be sufficient to show the ownership of their property, and then their passport copies get attached to that as well to show that they own the property, and they do an authority letter, and then you need, as well as that, from a local estate agent, you get a property inspection report. So उस property inspection report के हवाले से, it shows that there's a number of people, you provide to them the number of people living in the house, and they then also give you the information on there is that the bedrooms in the house, the measurements, they all show that there's enough space in the house for them to come and live with. So if you have enough room, you're living with parents, that's okay. You don't have to have your own place. अपना घर होना लाजमी नहीं है, उसमें आप जाके रह सकते हैं. दूसरी बात जो है ना वो अगर अपना घर आपका and you own the house, आपको mortgage के deeds देने पड़ेंगे कि एक तो mortgage का लेटर होता है कि उसमें आप इतना दिखा सकते हैं कि mortgage में आप अपने जो है ना हाउस के मुताबिक कि आप जो है ना अपना mortgage पे कर रहे हैं and you're not in any arrears in any way. You can't show arrears that you are behind with your mortgages and apply for a spouse partner. So as long as you can get a letter to say that your mortgage is up to date or your up to date mortgage statement, even if you don't get a letter, that would be sufficient evidence for you to show that you've got enough income to be able to support and accommodate your spouse as required by the immigration rules. The fourth and most important thing, how I explain this is, it's just like a piece of jigsaw. You've got 4 pieces that you must fit. Even if one piece is missing out of this jigsaw, you will get refused. So ये ज़रूरी है कि आप ये चार जो चीजें हैं, you have all 4 that you comply with. In relation to the 4th things is obviously the relationship requirement. So you have to be able to show that you and your spouse will be able to support each other and accommodate each other, and you are in a genuine and subsisting requirement. You can't show that you are not in a genuine relationship and you are applying just for them to come over to support them and accommodate them. Now, the question is, how can you show genuineness? How can you show that? Now, the way they test this is between you contact. So they will contact you with you be able to see. You have to have a SIM registered in your name.
in this country, and your spouse must have a SIM on their name. So they then have to have, ये हमारे एक weakness होती है कि obviously especially for girls, um, uh, in girls they don't have उनके अम्मी या भाई या anybody उनके नाम पे SIM register होती है. So when you apply for the visa, they don't have evidence to show that they own that SIM, and it doesn't show who they've been talking to, because your WhatsApp chat and your WhatsApp call history, they both have evidence that you've been in contact with each other. आपने एक दूसरे से राब्ता रखा है और एक दूसरे से आप बात करते रहे हैं. So you have that evidence there that you are in a genuine relationship. So that's how they test. Now, always advise my clients and always say to you that please take screenshots from the day your relationship has started. Usi date say please take screenshots of the amounts of time you've talked, and you only expected to talk. This is the very question that you get faced with, is 2 to 3 times even a week. Obviously, back in the days, people had WhatsApp wasn't available, internet नहीं थे, तो phone cards use होते थे, या Leica SIMs register हो जाती थी. These days, we've got mint के messages जा रहे हैं, WhatsApp, you know, all the different amount of social media that's available. But what we expect is, for the rules, you're only expected to talk 2 to 3 times minimum a week. If you've talked every day, you know, do the longest one that you've talked for, screenshot that, upload it on the website, and then you'd be able to show that you know that you're in a genuine relationship and you've been able to you know, had contact with each other. Messages as well, only one person will be able to export the messages to their email, and email पे फिर उनके messages आते हैं कि उनके messages में आपस में बातें करते रहे हैं. Obviously they want to see that you're loving stuff, and they want to see that you've had a nice relationship, and they want to see that you've had, if there's anything in your messages that you don't want to show, you know, you've had anything on there, you can delete that, then export it. But they do want to see that you've had a nice relationship. So please export as much as you can, and you will be able to show that you're in a genuine relationship with your the way that you've communicated with each other. The communication is a key to relationship, and when they see this, they'll be able to see that you have got evidence. You know, people with the bad thing about the social media, and the thing is, people lose things, phones break, WhatsApp, you know, they've lost everything. And so that's why it's advisable to save things as you're going along. You don't want to get to the end stage where you're doing your application, and at the paid stage where you're doing the application, और उस stage पे आके वो application refuse हो जाए because you're not able to provide evidence of contact. You need to be able to show evidence, and this is the most, you know, you're not writing letters to each other anymore. If you have sent gifts to each other, please keep the envelopes, keep scanned copies of that. जो procedure है वो इसके जो second half है program का, उसमें मैं आपको procedure भी समझाऊंगी, fees वगैरह भी बताऊंगी कि इसमें fees और procedure क्या है. लेकिन जो requirements हैं वो आपको मैं obviously बता रही हूँ कि इसमें ये जो requirements है ये है कि आपने अपने जो एविडेंस है उसको सही करके अपना तैयारी करनी है पहले, जो है ना, इंग्लिश टेस्ट के हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हवाले से, और रिश्ते के हवाले से. रिश्ते में आपने अपना ऑब्वियसली निकाहनामा भी देना है, उसको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट कराना है.
तो इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन है उसमें अपने स्पेलिंग्स वगैरह चेक करनी है कि उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं है, जैसे कि दूसरी बात है कि एंट्री और एग्जिट स्टैम्प है जो जो you got an entry stamp जब आपने when you went abroad you got your passport stamped and then you've come back and you've got an exit stamp. That stamp of the passports is vital that you put that in as evidence with the passport copy that you were physically present, because one of the requirements of the rules is that you are physically present in the in the require in the country of origin where the marriage takes place. You have questions. Can we do a phone call? Nikah, can we go on the phone? We can't go there. What is the requirement there? But that's not acceptable, because what is acceptable is that you have genuinely entered the country of origin. So if you've gone to Pakistan, India, बांग्लादेश, जहाँ भी आप गए हैं, मेरे साथ मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं जिस मुल्क से भी, उस मुल्क में भी जो है ना, you have to be physically present in that country. So them stamps are very important to be added to the application. दूसरी बात है कि if this is a first marriage, obviously it's just a nikahnaama. But अगर ये second marriage है, तो if it's a second marriage and your spouse previously had a registered marriage in this country, in the UK, you must have a divorce certificate. So decree absolute जो है ना वो लाजमी है. A lot of people are falling in the trap. Break when you can. निकाह किया था, तो इसकी तफसील जो है ना मैं आपको अभी छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद मैं इससे ज्यादा मजीद आपकी तफसील आपको बताऊंगी. CVFM Ramadan Live. Yeah, 5 minutes, yeah? Yeah, fine. I'll put my phone on charge, it's getting low. Herbs and spices. Our commitment to quality has remained the same since the day we opened our doors. We take pride in sourcing the freshest ingredients, and our customers can taste the difference in every bite. Did you know that Ahmed's Food Store was founded by the Mushtaq brothers in 1967? Their passion for quality food products and dedication to serving the community has been passed down through the generations. Today, we continue to uphold the same standards of excellence that the Mushtaq brothers established decades ago. So whether you're looking for a juicy cut of meat, a wide selection of fresh vegetables, or the perfect blend of spices, Ahmed Food Store has got you covered. Come and visit us at 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees, or give us a call at 01642 676 636. 01642 676 636. Ahmed Food Store, your trusted source for quality food products. This Ramadan, give your zakat and sadaqah in the name of Allah. With SKT Welfare, your donations transform lives, helping children go to school, providing safe water, protection in a safe haven home, and relieves hunger. For over 10 years, SKT Welfare has maintained a 100% policy, 100% zakat, 100% sadaqah, 100% lillah, 100% trust. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business, we can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint, Unit 2, Victoria Street, Middlesbrough, just opposite Lidl. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. Have you seen that change for life? It's about the little changes we can all make to be healthier. They're simple things like learning to watch the salt. You see, salt's really crafty. It hides in food you'd never expect, like cereals, bread and ready meals. It soon adds up and can increase our blood pressure, which can lead to heart disease or a stroke. That's why it's really important for us to cut down.
Just check the labels. It's easy to be food smart. For more ideas to help you and your family watch the salt, search Change for Life online. नसीम, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ तुम्हारा कारपेट देखकर बहुत अफसोस होता है। क्या करूं परवीन जी, उस दिन मैं कारपेट स्टोर पे गई थी, वहाँ की प्राइसेस को देखकर मुझे रोना आ गया था। बड़े स्टोरों की छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बरो कारपेट, जहाँ आपको अच्छा कारपेट बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. Burgerlicious, the unmistakable taste of flame grilled burgers right here in Middlesbrough. Burgerlicious offers tasty, affordable, made-to-order food sourced in the UK using local suppliers. We specialise in smash burgers, not just any burgers, but Angus, prime beef fillet, matured for days, as well as tasty chicken and fish burgers with options for vegans and vegetarians too. So why not get the real taste of mouth-watering food in a relaxed burger bar in the heart of Middlesbrough? It's not just delicious, it's Burgerlicious, and it's open 7 days a week at 242 Linthorpe Road, Middlesbrough. Call us on 01642 051 315 or visit www.theburgerlicious.co.uk to see our menu and place an order. Also, why not complete your dining experience with a visit to Chailicious, specialising in authentic Karak and Kashmiri chai teas and hot and cold desserts. Burgerlicious, home to the #1 smash burger specialist in the Northeast. इस रमजान कहाँ से मिलेगा ताज़ा को चिकन, फल और सब्जियाँ? आटा, चावल, दालें और तमाम मसाला जात, बेकरी का सामान, फ्रोजन फूड और किचन का तमाम सामान। There is only one destination for your food shopping this Ramadan. Kashmir Food Stores. Visit us today at 115 Abingdon Road, Middlesbrough. Telephone 01642 242426. Kashmir Food Store, your food specialist. 20 seconds. The station that lives and loves Ramadan. This is 104.5 CVFM Ramadan Live. Assalamu alaikum. Welcome back after the break. अगर आपने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है तो ये आप इमिग्रेशन स्पेशल प्रोग्राम लेके हाजिर हैं जो मेरा और आपका साथ एवरी सैटरडे 4 से लेके 5 तक इंशाल्लाह होगा और ये आप CVFM रेडियो रमजान लाइव YouTube फेसबुक पे सुन सकते हैं तो अगर किसी के पास कोई सवाल है आप फेसबुक पे भी डाल सकते हैं तो अगले जो है ना हफ्ते कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब को जो है ना आपको देंगे इसके बारे में आपको मालूमात दे सकूं और दूसरी बात है कि आप ये जो रेडियो का नंबर है 01642688104 इस पे आप मैसेज भी कर सकते हैं तो ये मुझ तक बायदरीस पहुंचा देंगे तो फिर आपको मैं जो है ना इनके जवाब दे दूंगी तो हम इस हफ्ते जो स्पाउस वीजा है उसकी कैटेगरी के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे तो और इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही थी ब्रेक से पहले आपको मैंने मालूमात दी है कि इंग्लिश टेस्ट और जो रिहाइश है और रिश्ता है और जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है इनकी 4 जो हिस्से हैं इनको आपने पूरी तरह से मुकम्मल करके केस डालना है तो फिर अल्लाह ताला जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और फजल से अल्लाह के हुक्म से जब भी आपका केस जाएगा तो इंशाल्लाह पूरी तैयारी से जाएगा तो इसमें रिफ्यूजल का कोई यू नो देयर इज नो चांस ऑफ रिफ्यूजल एट ऑल so inshallah agar aap application डालते हैं पूरी requirements से it will go through with the rules like I said it's with any law of this country you follow the law and you will succeed if you are breaking the law then obviously it turns into a negative outcome and a negative decision so break से पहले मैं आपको ये डिवोर्स के हवाले से थोड़ी सी मालूमात जो मैं समझती हूँ अपने जो है ना करियर्स में एक्सपीरियंस से कि
ये बहुत ज़रूरी मालूमात है जो आप लोगों तक पहुंच सकती है, वो ये है कि you have two people who are British nationals or they've got married in this country and they've just had a nikah. वो निकाह जो है ना लीगली इस्लाम के तौर पे इज वैलिड. अगर वो निकाह रजिस्टर होता है रजिस्ट्री ऑफिस में यूके लॉ के मुताबिक, तो फिर कल को अगर अल्लाह ना करे तो लेकिन उनकी औलाद की होती है and there's a divorce that takes place, you must have an English divorce to be able to remarry from abroad. So अगर आप जाके तो पाकिस्तान में शादी करते हैं या बांग्लादेश में या किसी मुल्क में, you must have a decree absolute before you get married. Now अगर आपके पास सिर्फ डिक्री नाइस आया है जो पहले मिलती है और आप जाके उस मुल्क में जाके तो शादी कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं और आप वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपका वीजा रिकॉग्नाइज नहीं होगा इंग्लिश लॉ के मुताबिक, क्योंकि ये वैलिड मैरिज नहीं थी. लीगली इंग्लिश लॉ के मुताबिक अभी भी आपकी शादी जो है ना वो इस मुल्क में you were still legally married. So that's why that marriage you would have to give, you might be given the option of applying for a fiancé visa and then get the marriage done afterwards within 6 months. या आपको ऐसे करना पड़ेगा कि जब आपकी डिक्री एब्सोल्यूट इश्यू हो जाती है, आपको दोबारा जाके मुल्क में जाके दोबारा निकाहनामा उस डेट के बाद का बनवाना पड़ेगा, and that's very very complicated. So इससे बेहतर ये होता है कि कदम उठाने से पहले आप ये देख लें कि मेरी जो डिक्री एब्सोल्यूट है वो मिल गई है, फिर वो जो निकाहनामा अब्रॉड जाके आपने बनवाना है वो उसके बाद का हो. ऑब्वियसली दूसरी कैटेगरी में लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि जब पहला स्पाउस अब्रॉड से इधर आया हो और वो शादी नहीं कायम रही और डिवोर्स हो गई है, तो फिर वो सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ निकाह किया था तो वो इधर आ गए, हमने इधर रजिस्टर नहीं की थी शादी, तो वो फिर जाके दोबारा से शादी करते हैं और फिर जब स्पाउस वीजा अप्लाई करते हैं तो वो उनके रिकॉर्ड में तो है कि आपकी पहली बीवी या हस्बैंड था, तो आपने शादी की थी, तो इधर इस मुल्क में आप आए थे, तो वो आपको कहते हैं कि आपका मैरिज वैलिड नहीं है, बिकॉज यू ऑब्वियसली still have a spouse in the UK. तो इधर तो आपने अगर खुला ले लिया है या इस्लामिक तलाक ले लिया है, तो वो सोचते हैं कि हमारी सेपरेशन हो गई है तो हम दोबारा से इस्लामी शादी करके वीजा अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि जब आप लोग वीजा अप्लाई करते हैं आप एक ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटिश एम्बेसी से वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उस मैरिज को अपनी सिस्टम में रजिस्टर करते हैं वैलिड. तो वो इधर रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी उनकी सिस्टम में रजिस्टर हो जाती है. तो इस वजह से फिर वो इधर जब आते हैं इस मुल्क में, जब वो आते हैं तो फिर वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है and they legally married in English law. So if you have a spouse from abroad and they've come to this country, you must at all times have an English divorce obtained, a decree absolute before you go abroad and you get remarried into the country of origin, and then apply with that decree absolute. Agar Islamic talaq hai, that is not recognized and that is even not required. That's for आपके Islamic reasons के लिए आपके लिए वो है, लेकिन जो मेन चीज है वो डिक्री एब्सोल्यूट है, तो उसके बाद की जो शादी है वो recognize करेंगे. Another example is for where people, for example, you've gone to Pakistan or you've gone to Bangladesh or India, Afghanistan, आपने जाके शादी की है, and then you've come back and things haven't worked out, और आपने उस स्पाउस को इस मुल्क में नहीं बुलाया, you haven't had them in this country and they're still abroad, they're still in Pakistan, and you never invited them, but then
आपने Islamic divorce card दिया. Obviously, it's not gone through the system, it's not gone through the English embassy, but there's another requirement that must be fulfilled before you can then apply for any second marriage that takes place abroad. And that's the English, agar aapne Islamic talaq di hai, that talaq has to be registered in a union council of that country, because there's a high court judgment, a case called Bake, in which the High Court judge ordered that any marriage that takes place in Pakistan and the spouse has not entered this country, or wo is mulk mein aaye nahi hai, and they're abroad, they must have that marriage registered in a union council, and that union council divorce certificate must be available as evidence to say that divorce has taken place, even if they haven't applied for a visa. Because obviously, when you're going to get married again, you're going to have a nikah nama. On that nikah nama, you get questions for both sides. Has this person been married before? Are they single? Are they divorced? Mutalqa, beva? You get that question. So you sometimes, our people think, oh, हमने तो वीजा ही नहीं अप्लाई किया, हमने सिर्फ निकाह किया था, तो हमने डिवोर्स भी अप्लाई कर लिया और वीजा नहीं अप्लाई किया, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा से जाके निकाह कर देते हैं. लेकिन ये याद नहीं रहता आप लोगों को कि जब आप निकाहनामा फिल करते हैं, उस पे हवाला दिया जाता है कि आया ये बंदा कुंवारा है, मुताल्का है, बेवा है, इसका सिचुएशन इसकी क्या है. तो जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं कि हाँ मुताल्का है, इसकी पहले डिवोर्स हो चुकी थी, तो वो फिर डिवोर्स का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि where is the divorce certificate, and at that point alarm bells ring thinking, oh, we don't have that. So then that is important कि पहले केस अप्लाई करने से पहले आप ये जरूरी है कि आप इसको रजिस्टर करवाएं. देखें अभी तो जैसे मैंने पहले बताया था प्रोसीजर ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जो कागजात है वो भी 2 ऑप्शन है, वो 3 ऑप्शन है बल्कि कि ऑनलाइन अपलोड होते हैं या बर्मिंघम में जाके स्कैन होते हैं या उधर पाकिस्तान भी सबमिट हो सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन होता है कि हम इधर ही उनको जमा करवाते हैं. You don't need to print photos off, everything has to be on A4, ईमेल के जरिए वो सब कुछ अपलोड हो जाता है. लेकिन ये बात है कि अगर आपने इतना अभी तो देखें जितनी एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव, आपने 10 लाख फीस पाकिस्तानी रुपए की है, जो हेल्थ चार्ज है तकरीबन 6.5 लाख का, तो वो है because they charge you in the currency of your country. So बेशक इधर it might be 1,700 to 2,000 or whatever, the fees that is getting paid is in your country is going to be converted into the pound rate, और pound का rate है भी 300 के ऊपर है. So ये जो 6.5 लाख की आपकी जो फीस होगी NHS की, एक तो ये बात है, दूसरी फीस है वो तकरीबन 4 लाख कुछ की वो होती है. तो 10 लाख एक गरीब बंदा कैसे अफोर्ड कर सकता है? अगर आप रिस्क पे केस डालेंगे, आप रूल के मुताबिक नहीं डालेंगे, आप जो है ना ये मालूमात लेके नहीं डालेंगे कि हमें कौन कौन से कागज चाहिए, obviously everybody is desperate कि हम जल्दी केस डालें, वीजा लगे ना लगे. अभी एक दफा रिफ्यूज हो गया केस तो 2.5 साल, अपील में 2 साल इजी लग जाते हैं. तो ये बेटर है कि आप पूरे तरीके से मालूमात लेके, गाइडेंस लेके अपना केस डालें, रूल्स के मुताबिक डालेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई रिफ्यूजल की गुंजाइश ही नहीं बाकी रहती. आपने केसेस में प्रोसीजर जो है ना ऑनलाइन सबमिट हो गया, एक दफा सबमिट हो गया तो उसके बाद ये जो सुपर प्रायोरिटी सर्विस शुरू हुआ है, इसकी वो जो मैंने बोला था आपको शुरू के प्रोग्राम में के मालूमात दूंगी, ये आपको आपके लॉयर को ईमेल आएगा, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 573 पाउंड आप पे करें तो विद इन 1 वीक आपका इंशाल्लाह वीजा लग जाता है. तो we've had decisions in 2 days, we've had decisions in a week. Well, that super priority visa just started this January. Prior to this, no साल बाद, एक साल लोगों ने वेट किया,
तब जाके उनको डिसीजन आया because obviously with the Ukraine crisis and refusals और उससे पहले जो कोविड का मसला शुरू था इस वजह से जो है ना काफी केसेस जो है ना बैकलॉग में थे लेकिन अभी माशाल्लाह उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी जल्दी फैसला करना शुरू कर दिया है बहुत जल्दी even without the super priority decisions I've had a case granted today in 6 weeks जो सुपर प्रायोरिटी के बगैर भी था तो इन ये बात नहीं है आपने जो है ना सही तरीके से सही कागज जो है ना आपने पूरे तरीके से पूरे करके you have a list which you follow and you do it to that list and इंशाल्लाह आपको कोई इसमें कमी पेशी नहीं आएगी आपके जो कागजात है वो पूरे तरीके से आपके जमा होंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपका वीजे में कोई रिफ्यूजल की गुंजाइश नहीं है नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगी आपको इसके बाद एक दफा जब स्पाउस वीजा ग्रांट हो जाता है तो आपको पता है आपको 2.5 साल का वीजा मिलता है लेकिन पहले वो आपको 3 माह का वीजा देंगे उधर सिर्फ 90 डेज का वीजा ग्रांट होगा तो वो 90 डेज में आपने सफर करना है तो उसके अंदर पहले तो वो फर्स्ट उसी वक्त आपको फैसला मिलता है लेकिन अभी आपके लॉयर को जो है ना या सोलिसिटर को ईमेल आ जाता है कि आपका वीजा हो गया बायोमेट्रिक लेटर आ जाता है वो लेटर वो आपको पाकिस्तान में नहीं देते हैं आप उधर सिर्फ आपका पासपोर्ट आपको वापस मिलता है वो पासपोर्ट और वो लेटर लेके जब इस मुल्क में आपने आना है तो इस मुल्क में फिर आपके स्पाउस को you need to take them to your local post office in your local post office then you will then collect your biometric card now these biometric cards and this is a very important piece of information that you all should have available to you with the facility of CVFM inshallah you all will get this ye jo card hai na they're all valid till December 2024 because they are abolishing the use of biometric cards in the whole of the UK. The visa might still be valid till November 2025 because it's been, for example, granted for 33 months in the initial stage. But these biometric PIN cards, obviously they look like little driving licenses. They will be abolished throughout the UK. The questions going to be coming in everybody's head. How will our spouses travel? How will we be able to go abroad? There's going to be an online coding system which you'll be given information for, and that coding system then will let you go online and get a code, and with that code, it's like a visa, you'll be able to travel. And you must keep these letters safe that you get in your email once the visa is granted, because the expiry of that visa is going to be in that letter, because all the cards are going to be only valid till December 24. Next December, all of them are going to be, cleared out. There's going to be no biometric cards issued after that. The only thing that's going to be is on the letters that you get. That's the only thing that's going to be your evidence when your visa expires. So when you apply for your next extension, that letter is a must that you have to keep in mind, because obviously when the visa is granted, you have 5 years in which you can apply for indefinite after 5 years. So then the 2.5 year period starts from when you entered this country. After completing 29 months in this country, you then apply for extension. Or inshallah next week, मैं आपको इसके rules और regulations जो in country के further leave और settlement के है ना, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास 3 या 4 हफ्ते होते हैं, उसमें जो visit visa है या nationality की categories हैं, वो सब मैं आपको कवर करके बताती हूँ और आपको बताती हूँ कि न्यूज़ रूल्स इसमें क्या है, रेगुलेशंस इसमें क्या है, और आप जो है ना किस कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे मैं आपको बता रही थी, इधर से आपके फिर पोस्ट ऑफिस से आपका बायोमेट्रिक कार्ड कलेक्ट करते हैं, which will be valid till December 24. फिर उसके बाद you can carry on, traveling,
that is your proof of ID, proof of work, alongside your letter. अभी तो इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, आगे को भी सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा, so you will have to, keep your letter safe. So जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो ये 2.5 साल की मजीद आपको मिलेगी, और फिर जैसे कि मैंने बोला कि उधर से जो वीजा है ना वो आपका फर्स्ट इंस्टेंस का वीजा मिलेगा 2.5 साल, एंड दैट्स अ प्रोबेशनरी पीरियड. तो इसमें वो ये भी इधर भी देखेंगे कि आप मियाँ बीवी का रिश्ता कायम रहता है कि नहीं रहता. So we do have, loopholes. Obviously, after when two people have children, and if you don't meet the rules, how you can still apply, even if you can't meet the 18,600. But first instance, when you're applying from abroad, like we said we've got category A, we've got category B, which is the 12 months. It's taken me a full hour even to discuss this part. And you've got self-employment category. So you've got where people are self-employed. So April से लेके April तक आपने अपने accounts देने हैं, आपने bank statements देनी है, और आपने 18,600 से ऊपर कमाना है. For sole traders people, please be aware you are under the sole tradership, where you're a taxi driver or you've got your own little business and you're not a limited company. Your rules are different. So you will be showing from April to April. Where people are limited companies, you must be aware जो रूल और कानून आपके लिए ना वो डिफरेंट है. सो आपके लिए जो कानून है वो है कि आपने लिमिटेड कंपनी अपने CT 600 के मुताबिक, जो CT 600 एंड उसके मुताबिक आपने अपनी इनकम दिखानी है. आप मेरे साथ ये CBFM लाइव सुन रहे हैं 104.5 FM पे और फेसबुक लाइव पे. मेरा आपका साथ भी 5 मिनट का रहता है. तो जैसे कि मैंने बोला कि इन प्रोग्राम्स में मैं आपको तफसीली मालूमात देती जाऊंगी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट देम ऑन द फेसबुक पेज और यू कैन मैसेज देम ऑन 01642688104. ये मेरी तरफ से भी आपके लिए एक सदका जारी है कि आपको मैं ये फ्री इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, जिससे अगर आपको you benefited from in this Ramzan month, just remember me in your du'as. Du'as are most important in this month of Ramadan for everybody, and मैं ये कहूँगी कि जो CT 600 है, getting back to the limited company people, CT 600 है ना, इसमें आपने जो अगर आप डायरेक्टर भी हैं और आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, you getting dividends, you must show the same period as your CT 600. So 12 months of pay slips and bank statements as well as your accounts. And for example, if another thing that you need to be aware of, if you are employed by a relative, for example, you're working for a brother or a family member and it's a limited company, तो वो आपको category A में नहीं recognize करेंगे. They will see you as a limited company because you're related to the person who's got the limited company. Like, for example, if you're working for your brother and then you have to show the same 12 months papers as your family member. Some people think, he's working in the takeaway, it's limited, I can employ him and I will give the same amount of income. No, it doesn't work like that. It will work if you have to show the same amount of income. It's really detailed. The rules are really detailed. Obviously, in program में मैं आपको general advice देती हूँ, लेकिन सबके cases मुख्तलिफ होते हैं, different होते हैं. So आपको ये advice होती है कि please अपने case के मुताबिक please seek advice and guidance for your case. Don't go just on what I give you, because in these programs, I just give you general advice of the law. You might have a complicated situation, which is different. So my advice to you in the disclaimer, I always put at the end of my program is that please get advice to your situation if it's complicated, and then apply for your visas. Don't just say, Nila ne bola tha program mein to humne kiya to kal ko refuse ho gaya, because there might be something in your case
which is different to what I've stated in your situation. The cases are complicated sometimes. So इंशाल्लाह यही प्रोग्राम लेके 4 से 5 तक मैं अगले हफ्ते आपके साथ अगर जिंदगी रही तो हाजिर हो जाऊंगी तो मेरी तरफ से सबको फिर एक दफा रमजान की बहुत-बहुत मुबारक है उम्मीद है आपके रोजे अच्छे गुजरे होंगे और प्लीज दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज On 104.5 FM, online, mobile app, Facebook and YouTube, this is CVFM Ramadan Live, in association with Borough Beds and Furniture, who make dreams affordable.